I must say, and I've said this when he's not in the room, is a person I admire honestly more than anybody, almost more than anybody else. It's just amazing. Not you, your team, the work you do. I don't think there's any issue more important than this for our country. Thank you so much, and you are having an impact. Of course, there's a long way to go. But I must say, you have touched the hearts of our viewers. So far, we've raised over 15 crores for this important cause. And please keep donating. It's very easy. Just go to our website, ndtv.com, and all the instructions are there, very clear. Please donate to this fantastic cause. And although we are all trying so hard, there are so many tragedies that happen every other day. As Gargi just said, so many children every hour are either abducted or raped. And we had in Lalitpur just a couple of days ago, this girl raped and went to complain and then raped by the police. How do you handle it when there's so much surrounding you that's difficult to control? Thank you, Dr. Rai. Let me say one thing, that each time when a daughter or son of a mother is sexually abused or raped, she cries. Each time when we fail a child to deliver justice on time, her mother cries and her head is shaken, heart is shaken, and head hangs down in shame. And each time when things like Lalitpur happen, when a police station officer raped a 13-year-old who went to lodge a complaint against gang rape, which has happened with her, her mother not only cries, but there is always a stigma on the head of that mother. And today, when the world celebrates Mother's Day, I'm not talking about the biological mother. I'm talking about Mother India. And today on this Mother's Day, I can say, sorry, Mother India, we are not able to protect your children. What else could be more gruesome and shameful, Dr. Rai? When this happened with this 13-year-old girl. Nothing worse. And it was not the first time. Her parents or she came to lodge complaints several times in the past against 2 of those 6 young men who raped her this time. But nothing has happened. And this delay in justice, this fail, is such thing which is intolerable. In fact, when you say mothers cry, I'm sure when you witness it, you talk to the family, you talk to the children, you must break down. Of course. Terrible. Each time it happens. Terrible. I mean, all of us actually. Sometimes, this is a shame for everyone who really respect India's constitution and laws and democracy and our religions and cultures and whatnot. Yeah. We are such a great country, but as you are showing it here, that each hour 5 children are sexually abused and 3 are raped. How could it be possible? How can we tolerate it? And this is a collective moral responsibility of each Indian. If we are really Deshbhakt or really patriotic, then we have to protect our children first, because sometimes they are so helpless, so hapless. Yeah. And I cannot explain their saga, their miseries in words. Yeah. And also the importance of NGOs, in fighting for this justice, because in the UP case, it was only after this girl told the whole account to an NGO, they went to the police, and then the police had no choice but to actually file the complaint. So this is something that we've seen, and the reason why our campaign is, so much more important to bring attention to this. मेरा ये था कि 1 साल हो गई है NDTV और जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड आपका जो फाउंडेशन है उसके साथ हम लोग जुड़े हैं, साल भर से अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि
आपके दिमाग में क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों आपको ये ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरीके की कैंपेन की जाए, और आप क्या हासिल कर चुके हैं? पहली बात तो ये कि हम उन बच्चों और उन परिवारों की मदद करना चाहते थे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जिनका रेप हुआ है, जिनके साथ यौन शोषण हुआ है। और जैसा हमने इन मामलों में देखा कि ना तो पुलिस आसानी से रिपोर्ट लिखती है, और पुलिस थानों के अंदर जो कुछ होता है वो ललितपुर की घटना है। हमने ये भी देखा कि किस तरह किसी मदद के अभाव में जलपाईगुड़ी में जो एक्यूज था उसको आसानी से बेल मिल गई, और इसके बाद वो धमकाता रहा बच्चे को और उसके परिवार वालों को मुकदमा वापस लेने के लिए, एफआईआर वापस लेने के लिए। ये बहुत आम बात है हज़ारों केसों में। इसलिए ज़रूरी था कि हम कानूनी सहायता उनको वक्त पर पहुंचाएं। दूसरा ये था कि ये बच्चे जो इस तरह की घटनाओं के शिकार होते हैं वो मानसिक रूप से इतना ज़्यादा उद्वेलित हो जाते हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं कि तुरंत ही उनको किसी न किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य की सहायता पहुंचाना है। तीसरी चीज़ ये है कि भले ही सरकारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बगैर प्रयास किए, वो प्रयास चाहे एनजीओ से हो, चाहे कोई अच्छे अधिकारी मिल जाएं, चाहे कोई और व्यक्ति हों, उस प्रयास के बगल ना कंपनसेशन आसानी से मिलता है, ना वो रिहेबिलिटेशन का जो फ़ायदा उनको मिलना चाहिए बाद में आर्थिक पुनर्वास का वो मिल पाता है। तो ये कुल मिला के इतनी मुसीबतें हैं, तो हमको लगा कि बहुत ज़रूरी है कि एक व्यापक कैंपेन चला जाए। और मैं एनडीटीवी का, आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग मिलकर एक बहुत बड़ा अभियान खड़ा करने में सफल हुए हैं, जहाँ हम लोग इस मुद्दे को एक आम नागरिक का मुद्दा बना पाए हैं। शायद इससे पहले दुनिया के इतिहास में डॉक्टर राय ऐसा कहीं नहीं हुआ कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ तो सारे देशों में किसी न किसी रूप में हो रहा है, लेकिन कहीं कोई किसी टीवी चैनल ने, कहीं किसी सामाजिक संगठन ने ये प्रयास नहीं किया कि इतना बड़ा एक राष्ट्रव्यापी अभियान इसके खिलाफ खड़ा किया जाए, जो हमने भारत में खड़ा किया है मिलकर। So thanks to you actually, thank you. And Gargi, in fact, it's been a learning experience, I think, for all of us, being in reporting for so many years and having seen so many of such cases. Even so, during the course of this campaign, the kind of stories we've seen, and also the kind of help that has come, and the rehabilitation of the child that you were talking about, the counseling in one place, you'd taken the child and moved the whole family to another city. That was the Delhi case, and and provided a school admission to the child. So all this, it's not just the crime and justice there. There's so much more that needs to be done. So Satyarthi ji, do you feel this campaign has managed to get a lot of conversation around this entire issue? As you said, nobody's ever done a campaign like this around this particular issue. What do you feel has been, so far the success of this campaign? Apart from the social awareness which has been created immensely, we have come out with very, very, I would say, success stories, individual success stories as well as the data. Yes. Like in 1 year, 8,261 interventions have been made in POCSO cases through our efforts, when the campaign was launched. 8,261, and that was a great success. Over 1,000 legal interventions, direct interventions in the courts are being made by our lawyers. We have appointed 61 lawyers in 15 states and more than 130 districts. So the whole idea was that we are going to work with 50 districts and 5,000 cases. But within a year, it has gone up to 135 districts and these more than 8,000 cases. I also want to add, as you're speaking, it struck me that, as Gargi was saying, you do a lot of rehabilitation because there's stigma, there's trauma. We at NDTV would like to help in that rehabilitation. Any child that wants to, who's say 18, wants to be an intern here, wants to work here, we'd be happy to participate in that. Thank you so much. Definitely, because we are proud to say that many of the survivors of trafficking and sexual abuse and slavery are emerging as their own leaders and liberators. Yes. Apart from this direct intervention with POCSO cases and child sexual abuse issue,
My organization, my foundation has been able to rescue over 10,000 children from trafficking. And many of these children could have been ended up in slavery or sexual slavery. And sexual abuse was a common thing with the girls, especially when they are working as domestic help and so on. So this was possible. And out of these 10,000 cases, over 10,000 cases of direct rescues, almost half of them were possible through the survivors' leadership. We have created a network of survivors, and what they call the survivors on bike. So they go on bicycles and they collect evidences, they collect information and intelligence, and on the basis of that, such rescue operations were possible. Fantastic. लेकिन ये मुश्किल काम भी होगा कैलाश जी, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं जो कि ये कुकृत्य करते हैं, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि शासन प्रशासन में उनका कुछ रसूख भी होगा, ऐसे लोग जान पर भी नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है जलपाईगुड़ी वाले मामले में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रिहैबिलिटेशन तो तब होगा जब कोई बच्चा आप तक पहुंच पाए या कुछ ऐसे प्रयास से जुड़ पाए। उन बच्चों का क्या जो कि इस प्रयास में शामिल ही नहीं हो पाए हैं, तो ये आपके मन में ये बात आती है कि न जाने कितने ऐसे मामले होंगे जो अभी हमें मालूम ही नहीं है हो रहे हैं। Especially during COVID, this last 2 years, it's increased. COVID. तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि उस हर बच्चे तक पहुंचा जाए जिसके साथ ये हुआ है। तो कुछ तो मीडिया के माध्यम से पता लगता है, कुछ अखबारों में छपता है, लेकिन हमने खुद 100 से अधिक सामाजिक संगठनों का, NGOs का नेटवर्क तैयार किया जो गांव-गांव में काम कर रहे हैं, और कई हजार वॉलंटियर्स भी इस बीच में 1 साल के अंदर नियुक्त किए, जो वॉलंटियर्स एक पार्टली ट्रेंड सोशल वर्कर भी बने, हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी है। तो उन लोगों ने 3400 ऐसे घरों में जाके बातचीत की है और कुछ काउंसलिंग की है, कुछ समझाने की कोशिश की है, और मानसिक रूप से उस परिवार को तैयार किया है कि वो किसी के दबाव में ना आए, किसी के डर से ना आए, किसी के लालच में ना आए, और उस लड़ाई को लड़ें। तो वो लगातार उनके संपर्क में हैं, करीब 3,500 परिवारों के। तो ये कोशिश हमारी होती है कि डायरेक्ट वो हमारे पास नहीं आए थे ये 3,500 परिवार, लेकिन हम ही उनके पास पहुंचे जब हमको पता लगा कि इस तरह का हो रहा है उनके आपको साथ। क्या लगता है और क्या प्रयास किया जा सकता है बच्चों तक पहुंचने के लिए? जैसे कि अब आपके मन में ये होगा, ये सवाल बड़ा लाजमी है कि कैसे वो बच्चे आप तक पहुंचे या आप उन तक पहुंचे। एक माध्यम तो मीडिया हो गया जी, लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के इस जमाने में या एक टेक्नोलॉजी के इस जमाने में आपको लगता है कि इस सब चीज का फायदा उठाया जा सकता है ताकि बच्चे तुरंत संपर्क साध सके? बिल्कुल, हम लोग दूसरा एडल्ट्स नहीं है, बच्चे जी जी जी। तो सोशल मीडिया का भी हम सहारा ले रहे हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता या वॉलंटियर्स बन रहे हैं उनको सोशल मीडिया की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम बाकायदे। लेकिन दूसरी तरफ हमने एक और काम पूरे 1 साल के अंदर किया कि करीब 1600 सरकारी अधिकारियों को, जिसमें पुलिस के लोग हैं, जिसमें और दूसरे महकमों के लोग हैं, उनको भी सेंसिटाइज किया और तैयार किया। न केवल पॉक्सो की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी, बल्कि इस बात के लिए भी कि अगर उनके पास कहीं से सूचना मिलती है तो हम उन बच्चों की मदद करने तैयार हैं, ग्राउंड में जाके उनके घरों में जाके मदद करने तैयार हैं। तो बहुत सारी सूचना हमें उन लोगों से भी मिल रही है। कोर्ट के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू से ही ये सोचा था कि हम जो इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकारों के, उनके साथ मिलकर काम करें, उन्हें स्ट्रेंथन करें, उनको और एम्पावर करें, मिलके करें, और वो हो रहा है।